Hello, good morning students. Today we do the quantum numbers and its related numericals or problems. We know the quantum numbers are of four types: S quantum number, N quantum number, L quantum number, M quantum number and S quantum number. N stand for principal quantum number. L stand for azimuthal quantum number. M stand for magnetic quantum number. S stand for spin quantum number. ठीक है, and all these quantum number have its importance. And now we do the numericals of these questions, these quantum numbers. The first numerical is, if the quantum number L has value 2, then what are the permitted values of the quantum number ML? ठीक है, it means अगर हमारे पास जो L की वैल्यू 2 है तो हमारे पास what are the possible value of ML quantum number? M means magnetic quantum number, and we know how we find the magnetic quantum number minus L2 plus L. ठीक है, एंड नाउ वी हैव L की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ? -2, -1, 0, 1, 2. इट मीन्स -2, 2 plus 2. तो देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, एन एटॉमिक ऑर्बिटल n equal to 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L? मतलब इफ आपके पास n की वैल्यू 3 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L? तो फॉर हाउ वी फाइंड L? 0 to n minus 1. इट मीन्स 0 to 3 minus 1. इट मीन्स 0 to 2. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L आर 0, 1 and 2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. An atomic orbital has L equal to 3. What are the possible values of ML? ठीक है, if now L की वैल्यू 3 है तो हमने किसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है? ML की. तो how we find the M? We know minus L2 plus L. For L equal to 3, it means -3, 2 plus 3. For all possible values of M, magnetic quantum number is -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So there is 7 possible value of magnetic quantum number. Now we do the question number 4. List all the possible value of L and M for n equal to 2. मतलब for n equal to 2, we write the possible value of L and M. How we find L? Method to find L is 0 to n minus 1. Means 0 to 2 minus 1. It means 0 to 1. The possible value of L are 0, 1. And similarly, how we find M? Minus L2 plus L. First, for L equal to 0, minus 0, 2 plus 0, it means 0. For L equal to 1, minus 1, 2 plus 1, it means possible values are -1, 0 and 1. Okay. Hello students, now we do the next numericals related to quantum numbers. The question is, using the SPD notation, describe the orbital with the following quantum number. मतलब हमने SPD और नोटेशन को यूज करके इन क्वांटम नंबर की हेल्प से पता लगाना है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ n equal to 1, L equal to 0. n equal to मतलब 1 means फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट शेल. L for L equal to 0, we have S orbital. Therefore, the orbital is 1s. Second part is n equal to 3, L equal to 2. For n equal to 3 means the third subshell. L for L equal to 2, it is
we know for L equal to 0 there is s orbital, L equal to 1 there is p orbital, L equal to 2 it will be d orbital, L equal to 3 it means f orbital. So using this formula n equal to 3 and for L is equal to 2d, so it is 3d orbital. Third part is n equal to 3, L equal to 1. तो n equal to 3 means थर्ड सबशेल, L equal to 1 means p. तो हमारा ऑर्बिटल कौन सा आ गया? 3p ऑर्बिटल. पार्ट नंबर 4, n equal to 2, L equal to 1. n equal to 2 means the second subshell, L equal to 1 means p. It means 2p orbital. Part number 5, n equal to 4, L equal to 3. n equal to 4 means fourth subshell, L equal to 3 means f. तो orbital is 4f. Part number 6, n equal to 4, L equal to 2. n equal to 4 means 4 subshell, L equal to 2 means d. Therefore it is 4d subshell. So in this way we do this numerical. Now we do next numerical. The next numerical is what subshells are possible in n equal to 3 energy level. मतलब अगर हमारे पास n equal to 3 है तो उसमें कौन कौन से सबशेल आर पॉसिबल है. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर n equal to 3 हमने पॉसिबल सब शेल्स दसने हैं. तो पॉसिबल जो शेल सब शेल दसने का हमारे पास क्वांटम नंबर कौन सा है? एल हमें बताता है कि हमने कितने हमारे पास सब शेल होंगे. तो एल को फाइंड आउट करने का मेथड है 0 to n minus 1. इट मीन 0 to 3 minus 1, 0 to 2. इट मीन 0, 1 and 2. अब L इक्वल टू 0 किसके लिए है? ऐसे सब शेल के लिए. L इक्वल टू 1 किसके लिए है? P सब शेल के लिए. L इक्वल टू 2 किसके लिए है? D सब शेल के लिए. इट मीन्स हमारे पास कितने सब शेल हो गए? 3 सब शेल, S, P and D. एंड वी राइट इज 3s, 3p and 3d subshell. Okay. Now we do the next numerical. How many orbitals of all kind are possible in this level? तो how many orbitals are possible? ठीक है, 4, 3s and we s subshell is 1 orbital. p orbital has 3 orbital. p subshell has 3 orbital and d subshell has 5 orbital. So total number of orbitals 1 plus 3 plus 5, that is 9 orbitals are in there in third subshell.